बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट तारिक भट्टी। न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप के प्लेटफॉर्म से कतलूनिया की सिचुएशन का सब दोस्तों को आइडिया है कि किस तरफ ये जा रही है। कतलान आज़ादी पसंद आए दिन मुजाहरों के साथ सड़कों पर होते हैं और चंद दिन पहले 1 मिलियन मार्च किया उन्होंने। और गो के इनकी जो आज़ादी की तहरीक है, अब पीछे हम देखते रहे हैं कि वो बड़ी पुरअमन एहतजाज करते हैं और कोई भी जो कहते हैं कि नुकसान नहीं पहुंचाते दुकानें और जो भी है। लेकिन पिछले चंद दिन से हमने देखा है कि काफ़ी मसले मसाइल पैदा हुए हैं। पुलिस के साथ उनकी लड़ाई झगड़े, लाठीचार्ज, आंसू गैस और प्लास्टिक की गोलियां और ये सब कुछ। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कतलूनिया की जो एक बड़ी तहरीक आज़ादी की अमोनियम कल्तुराल कतलूनिया की तहरीक आज़ादी की पुरअमन जद्दोजहद करने वाली सबसे बड़ी तंजीम है और उसके स्पोक्स पर्सन है जाइमा कोमपान, इंटरनेशनल सेक्रेटरीट के तर्जमान हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस सारी तहरीक के बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। वेलकम टू शो। We see that these days Catalonia is under intense protest with millions of people on the street. What are they protest for? The protests are because people are very disappointed and in anger because this week we have known the sentence of the judicial system in Spain that has decided that peaceful activists and also politicians will have to be in jail for the next 9 to 13 years. So this is very astonishing. We never thought that in our democracy this would happen. So now we feel that we have to protest, and that's why people is in the street claiming for a solution, a peaceful solution based on democracy. That's all what people is asking for. My second question is, we have observed that Catalan movement has always been peaceful, but for last days we seen some violent trend in protests in different cities. Violent protests are dangerous not only for Spain but also for Catalonia. What do you want to say about these violent trends? Well, it is true that we have been for over the last 9 years demonstrations that have been very peaceful, absolutely exemplar demonstrations. Now we think that people are more in anger, and we also have to take into account that the police and the state are acting disproportionately against the people, the citizens. So they have weapons, and we, the citizens, we only have our word to say, and that's why we understand that now that police are here, now there are incidents. So this makes us think that the movement for the freedom of Catalonia remains peaceful, and now if the state is using the police and the judicial system against us, they are who are using the violence, unfortunately. My next question, despite all what we have seen in past few days, may I ask you a relevant question? How long you are prepared to strive for this cause? We want a new state in Europe
the first thing that we want is to have a referendum, and now and then with the results, people should be able to decide whether it's a good project or they prefer to remain in Spain. I think that it is something very legal, very democratic to ask to the citizens what they want in the future. Like in Scotland, they voted if yes or not. So I think that this is something very, very easy. The solution is very easy. And the second question that you were mentioning on why we want independence is because we want a new country full of opportunities where the minorities are respected, and well, the human rights are also respected, where you can have a fair trial, where you can develop your life and your projects. And this is why we are very excited to build a new country. And now with the Spanish state, they are not offering anything to the communities that we are living in Catalonia. So we are very serious on asking for this referendum. And at the end, thanks to the solidarity of a lot of countries and all the citizens that we know that they are in favor of our claim, this will end up happening for sure. Thank you very much for your time. Yes, well, thank you for asking and coming to our home to ask our opinion. I think that a lot of your people of your community are very worried, but thanks for your interest, and at the end it's your house, so thank you for coming. तो नाज़रीन, अभी आपने जो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि अमोनियम का कल्तुराल जो कि यहाँ की कतलुनी की तहरीक की जो पुरअमन जदोजहद करने वाली तहरीक है, उसके ये इंटरनेशनल सेक्रेटरीट के तर्जमान थे, उनसे आपने बातचीत उनकी सुनी, उनका मौक़िफ़ आपने सुना। इससे तो साफ ज़ाहिर है कि वो कहने का उनका मकसद यही है कि वो कतलुनी की आज़ादी तक अपनी जदोजहद को जारी रखेंगे। इस इंटरव्यू के लिए हमारे साथ सबसे जो हमारे बड़े मुहसिन हैं जनाब अहमद डार साहब, उन्होंने हमारे साथ बड़ा तावन किया और उन तक पहुंचने में हमारी मदद फरमाई। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं सर। सो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, हम आपसे मुख्तलिफ लीडरान की जो कतलुनिया स्पेन में रहते हैं, कतलुनिया में रहते हैं, MNAs या MPAs या कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक पर्सन होंगे, हम आपसे ज़रूर मिलवाते रहेंगे, उनका मौक़िफ़ आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। अब तक के लिए अपने होस्ट तारिक भट्टी को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।